Hey guys, welcome to our channel. This is Good Job, and today's video will be talking about inverse trigonometric functions. Now what is inverse trigonometric function? As the name suggests, it's not that simple. Most of people will say the inverse of a trigonometric function, say sine x inverse, will be called inverse of a trigonometric function. No, it just means reciprocal of this sine function. If this doesn't mean the inverse of a trigonometric function, then what does it mean? Now, consider sine function. Firstly, its domain is of real number and its range is from -1 to 1. इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं. Now let's talk about another function. Suppose f is a function from x to y, that is x is domain, y range, and f of x is equal to y. Now, if this function f is 1 1 and onto, now if this function f is 1 1 and onto, then we can define another function, unique function g, from y to x such that g of y is equal to x, and this function g is called inverse of this function f. Now, if g is inverse of this function, then another point for g is that domain of g will be equal to range of f, and range of g will become domain of f. Now, if we can apply the same method of this or the same formulation to sine function, then we can find out its inverse. Now, sine function is not a 1 1 and onto function, but if we can restrict its domain from -π/2 to π/2, then sine function becomes a 1 1 and onto function. Now, we can define another function whose range becomes -1 to 1 and whose domain becomes -π/2 to π/2. Sorry, whose domain becomes -1 to 1 and range becomes -π/2 to π/2. Such function will become the inverse of this sine function and is denoted by sine inverse function. Okay, so domain दोनों की क्या होगी, इसकी रेंज क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन, और इसका डोमेन क्या बन जाएगा, इसकी रेंज. कूल. सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x is equal to x, and if sine inverse x is equal to y, then sine y will be equal to x. Now, we restricted its domain from -π/2 to π/2. We call this branch principal branch or principal value branch, and any value of sine inverse x that lies in this branch is called principal value. Now, we can also restrict its domain from -3 π/2 to -π/2 and π/2 to 3 π/2, but these are all called simple branches. Okay, so in the upcoming examples or upcoming questions, if it is not clear which branch we are talking about, we're just going to assume that we're talking about the principal branch, that is -π/2 to π/2. Now, for the first example, we have to find principal values for these inverse trigonometric function. First one is sine inverse 1/√2. अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, सो इसकी वैल्यू वो होनी चाहिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती हो. तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 टू π/2. नाउ इसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y. तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन y इज इक्वल टू 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे. सो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2. तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू π/4. सो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4. सो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इक्वल टू π/4. सेकेंड है हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स -1/√2. कोटेंजेंट केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से लेके पाई तक. सो सेम मेथड फिर से, लेट कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y. सो कोटेंजेंट y बिकम्स -1/√3, और कोटेंजेंट की वैल्यू माइनस और 1/√3 कब होती है, π/3 पे. सो वी हैव माइनस कोटेंजेंट π
पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट माइनस पाई बाय 3. अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, सो वी कैन राइट इट एज कोटेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 3 बिकॉज कोटेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोटेंजेंट माइनस पाई बाय 3. सो इट इज इक्वल टू कोटेंजेंट 2 पाई बाय 3. सो y की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी हमारे पास 2 पाई बाय 3. सो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कोटेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. अब लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर द रूट 3. Now principal value branch for this case is again minus pi by 2 to pi by 2. तो इसमें भी हम सेम मेथड यूज करेंगे. क्या करेंगे सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू y. सो टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू y implies टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस रूट 3. अब टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कब होती है पाई बाय 3 पे. सो वी गेट टेंजेंट पाई बाय 3 which is equal to tangent of negative pi by 3. Now this value lies in the principal class, principal value branch. So principal value for tangent inverse minus root 3 is equal to minus pi by 3. Now in this example we have to find principal value for tangent inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. तो हम क्या करेंगे सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे, एक साथ यहाँ पुट करेंगे एंड विल फाइंड द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट वन प्रिंसिपल वैल्यू फॉर टेंजेंट इनवर्स 1. वी नो लेट टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू y implies टेंजेंट y इज इक्वल टू 1. टेंजेंट की वैल्यू कब होती है पाई बाय 4 पे. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर टेंजेंट इनवर्स 1. सेकेंड इज cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2. सो लेट cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू x implies cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. इसकी वैल्यू यहाँ पे कब होती है पाई बाय 3 पे. सो cos पाई बाय 3 नेगेटिव विच इज इक्वल टू cos ऑफ नेगेटिव पाई बाय 3. बट वी नो दैट cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x. सो वील राइट इट एज cos पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3. सो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर cos inverse minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3. Third is sin inverse minus 1 by 2. Let sin inverse minus 1 by 2 is equal to z. So sin z is equal to minus 1 by 2. अब sin की वैल्यू 1 by 2 कब होती है पाई बाय 6 पे. सो माइनस 1 by 2 है तो विल राइट माइनस साइन पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6. And we know sin of minus x is equal to sin of x. So in this case principal value for sin inverse minus 1 by 2 is equal to pi by 6 negative. तो हमारे पास तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है. पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू है 2 पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू है पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू. अब इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 12. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 पाई प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई और यहाँ पे 2 पाई विच इज इक्वल टू 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 9 पाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. So the principal value for this whole equation is equal to 3 pi by 4. Now before we attempt our next example, remember how in trigonometric function we had a lot of identities and formulas. The same goes for inverse trigonometric function. So you can pause the video right now to check them out. Now let's attempt this example. Now in this example, we have to show that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. Okay, we have to solve it. So say let sin inverse x is equal to theta implies sin theta is equal to x. अब हमारे पास वैल्यू है x की sin theta. use this value in this equation. So right hand side becomes is equal to sin inverse x की जगह क्या आ जाएगा sin theta. So we have 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Now this is an identity for sin 3 theta. So replacing this identity, replacing this whole with sin 3 theta, we get sin inverse of sin 3 theta
and we know that sine inverse of sine x is equal to x. So sine se sine cancel, we get 3 theta, but theta is equal to sine inverse x, so we get 3 sine inverse x, which is equal to the left hand side. So left hand side is equal to right hand side, and hence the solution. Now in this example, we are given an inverse trigonometric function tangent inverse under the root 1 minus cos x upon 1 plus cos x, and we have to express it in the simplest form. So in this case, let's solve this. We have tangent inverse under the root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Now 1 minus cos x can be written as 2 sine square x by 2, and 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2. So we get, replacing these two by these two, we get 2 sine inverse, 2 sine square x by 2 upon 2 cos square x by 2. 2 से 2 cancel, we get tangent inverse under the root sine square x by 2 upon cos square x by 2, which is equal to tangent inverse under the root tangent square x by 2, which is equal to tangent inverse tangent x by 2. Tangent inverse of tangent x is equal to x. So tangent से tangent cancel, इसकी वैल्यू आ जाएगी x by 2. So simplest form of tangent inverse under the root 1 minus cos x upon 1 plus cos x is equal to x by 2. Now in this example, we have to find the value of tangent inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे sin inverse 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So put sin inverse 1 by 2 is equal to x implies sin x is equal to 1 by 2. अब sin की वैल्यू 1 by 2 कब होती है, पाई बाय 6 पे. So we get sin pi by 6 is equal to 1 by 2. So sin inverse 1 by 2 is equal to pi by 6. तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो. We get tangent inverse 2 cos 2 into pi by 6. 2 से 6 कैंसिल, 3 आ गया हमारे पास. So we get tangent inverse 2 cos pi by 3, and we know cos pi by 3 is equal to 1 by 2. So we get tangent inverse 2 into 1 by 2. 2 से 2 cancel, we have tangent inverse 1, and tangent inverse 1 is equal to pi by 4. So the value for tangent inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2 is equal to pi by 4, and hence the result. So guys, this was it for today, and if you have any doubt regarding this chapter or any other chapter, you can roam around a little bit in the comment section, leave down a comment, ask your doubts. You can also ask us some problems, and we will try our best to get back to you. So just like every time else, keep practicing.